Well, so today our topic for discussion is endometriosis. So it is a very important topic. When I was giving my exam, so almost my the gynae paper was almost from full of endometriosis. Every next MCQ is endometriosis. So you have to learn it thoroughly. So I am trying my best so can make you easy for you people. So we have to follow the Eshre guidelines for endometriosis, but we have two slides for NICE guidelines. You don't have to read the full guidelines of NICE. So both the last two slides which I am going to share with you, that is enough for endometriosis. But the best guidelines for endometriosis is Eshre, so we have to follow the Eshre guidelines. Okay, so before proceeding toward the endometriosis, first of all, we guideline. So, okay, so the other thing is that it is also seated with chronic pelvic pain. So, one of the cause of the chronic pelvic pain is endometriosis. So, chronic pelvic pain is also important. So, I also make another separate lecture for chronic pelvic pain. So it's the chronic pelvic pain is important in regarding the TOC station, and the endometriosis is also important. In every exam, especially in both for theory and talks, this topic is very important. So you have to learn it very thoroughly and understand the things that what option we have to discuss with the patient, what are the treatment options, what are the examinations. So everything in every aspect, it is very important. So first of all, what is endometriosis? We have to start with definition. So endometriosis, it is a disease in which the tissue to the lining of the uterus grows outside the uterus. So the lining of the uterus is endometrium. When it grows outside the uterus, so it will call as endometriosis. So what are the risk factors? Important risk factors are that is early menarche, short menstrual cycle, prolonged heavy menstrual flow, delay of first birth, reduced number of pregnancy, and positive family history of endometriosis. So these are the risk factors that predispose to endometriosis. So the further we have the theories, as you have heard about it, the theories regarding to endometriosis. So I've just mentioned it that the first theory is retrograde menstruation, the other thing is coelomic metaplasia, and the third one is vascular and lymphatic metastasis. So these are the three theories due to which, so we have to just memorize the name, not I don't think so need much detail, but maybe in MCQ they ask you about different theories, what is the theory related to endometriosis, so you have to just memorize the names. So that is retrograde menstruation, the other thing is coelomic metaplasia, vascular and lymphatic mets. Then we have a classification. So the classification is the first one is we have four classification in which these classification we have to classify the endometriosis according to laparoscopy. So when we are doing a laparoscopy, then we will classify and stage the disease. Otherwise, we cannot. Ultrasound is not a modality for to classify the endometriosis. Okay, so the first one classification is minimal, and the score is, we have a score of up to 40. So the first one is minimal 1 to 5 score. In 1 to 5 score, how we can give the score 1 to 5? So when there is superficial lesion commonly on the pelvic side wall and pouch of Douglas. So we have the score of 1 to 5. The second one is mild, and the score is 6 to 15. When there is superficial lesion, some deep lesion more than 5 mm below the peritoneal surface. This one is the second classification. The third classification is moderate, and the score for this is 16 to 40. In this, we have endometrioma and minor adhesion between the ovaries and uterine wall. Pouch of Douglas was not adherent. And the fifth one is severe endometriosis, that is the score of more than 40. Severe adhesion between bowel and bladder and bowel bladder involvement, and severe damage to the pouch of Douglas. In third, the pouch of Douglas was not adherent, not damaged, but in severe endometriosis, everything is jam-packed.
a severe adhesion between the bowel bladder involvement. So in talks they also give images of different deposit of endometriosis in different areas. So if you have to memorize these score, so it will be very easily to identify the laparoscopic view of that specific, that in which classification this picture lies. Okay, so these classification are beautifully written in EBM. So you have to just go through EBM and just save this classification. Okay, so it's very simple. It's not for exam. For SBAs, less likely it will not come. But for talks, they must ask about the classification and the scoring. So I've just bit detail regarding given you the detail regarding the classification. Okay, so now we have to proceed for the sign and symptoms, and also called as history points. So the patient presents with endometriosis complaining of cyclical and non-cyclical signs and symptoms, both related to the cycle, because endometriosis not involve the uterus and ovaries, but it involves the abdominal structures. That it also the involvement of chest, because, and the other thing is that when you have any scar, for example cesarean scar, episiotomy scar, so the endometriosis can go there always also. So because also we have a theory is also that the vascular and lymphatic mets, so it spread through vascular and lymphatics. So that's why different areas of the body is involved in endometriosis. So the signs symptoms are dysmenorrhea, dyspareunia, dysuria, dyschezia, painful rectal bleeding when it involves the bowel, hematuria when it involves the bladder, shoulder tip pain, catamenial pneumothorax when it involves the chest, cyclical cough, hemoptysis, chest pain, cyclical scar swelling and pain, fatigue and infertility. Okay, so these are the history points. So a patient will presented with dysmenorrhea, deep dysmenorrhea, dysuria, painful rectal bleeding, hematuria, shoulder tip pain. Okay. So now we will proceed toward the examination and diagnostic test. So first of all, we will thoroughly examination of this patient, from proceeding toward start from the, as always we do, from check the vitals, then also we will do her look for anemia, then we have to check her chest, because endometriosis can also involve the chest. Then we have to, and then we advise according to if the patient presented with pain and cyclical hemoptysis, then obviously we have to investigate. For investigation, we do chest x-ray. Then we will do per-abdomen examination for any ovarian endometrioma, ovarian mass. We have to palpate, and per-vaginal examination. So in per-vaginal examination, the per-vaginal examination findings will be like there will be fixed, the uterus will be fixed, and there is tender nodular in the pouch of the tender and nodularity in the pouch of Douglas. Okay, so on examination we have this that type of findings on per-vaginal examination. So, okay, so per-vaginal examination, we'll do bimanual examination. There will be tenderness in the pouch of Douglas. There may be adnexal masses. There will be fixed retroverted uterus and nodularities on the vaginal examination. Okay. Clinical examination, so they also tell that clinical examination including vaginal examination will where appropriate should be considered to identify deep nodules or endometrioma in patient with suspected endometriosis, although diagnostic accuracy is low. Okay, so diagnostic accuracy is low, but first we will do examination is must. Then we will proceed toward the imaging. So in imaging, other biomarkers are not important, like blood investigation like CA-125 because it is also raised in endometriosis. So the best investigation in this regarding the endometriosis, so we have different type of MCQs. As I've told you that
in my exam a lot of MCQs from endometriosis. So, and regarding investigation, so when they have asked about the what is the next investigation and how to identify endometriosis, so the next investigation on for identification, our first investigation we will do transvaginal ultrasound. You have also offered transvaginal ultrasound, okay. सो अगर MCQ आपके पास आए तो आपने चूज़ करना है नेक्स्ट में या फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन में आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड को चूज़ करना है, ठीक है। अगर आपके पास आए कि गोल्ड स्टैंडर्ड एंड डायग्नोस्टिक, गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास कौन सा होगा, आप पे अगर आपसे पूछे स्पेसिफिकली गोल्ड स्टैंडर्ड, सो दैट वुड बी एंड लेप्रोस्कोपी. So you have to differentiate between these two, that what to choose, okay, in exam, because it's very important and a lot of MCQ from this, that first line investigation diagnostic or next, so that will be transvaginal ultrasound. And if they ask about gold standard, then gold standard is laparoscopy, okay. इट मे बी ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड पे मिल जाए या एग्जामिनेशन पे, बट व्हेन द पेशेंट इज सिम्टोमेटिक इट मीन्स दैट देयर इज समथिंग, because it's not important, it's not a very important that the endometriosis involve only the uterus and ovaries and the specific findings or the bimanual examination, but in the endometriosis is that type of disease that involve the peritoneum, so they are deep deposits, so that would could not be appreciated, and even on a laparoscopy you cannot appreciate it, but the patient presented with pain, severe pain. So with peritoneal endometriosis, the patient have a very severe pain, but we couldn't identify on ultrasound or so. We will then proceed if there is peritoneal endometriosis. If you are suspecting that, we have go to stepwise approach. I will tell you about that. So for peritoneal, if you are suspecting that the patient having peritoneal endometriosis, then in that cases better option is laparoscopy, okay. So the GTG recommend that laparoscopic identification of endometriosis lesion is confirmed histologically, although negative histology does not entirely rule out disease. So confirmation for the diagnosis is histology. We have to, if we see the while we're doing laparoscopy and we have seen there is any spot, so we have take the biopsy, and for confirmation histological confirmation is best. Both diagnostic laparoscopic and imaging combined with empirical treatment, hormonal contracepting and progestogen can be considered in women with suspected of endometriosis, but there is no evidence of either approach, and pros and cons should be discussed with the patient, okay. So कहते हैं कि both diagnostic laparoscopy, imaging और empirical treatment, ये combination कंबाइंड बहुत इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो अगर आप इन केस ऑफ सस्पेक्ट कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस, follow up obviously because they are very psychologically they are very deprived, these patients, so we have to psychological support is very important. So in this paragraph you have read about the symptoms, what are the symptoms, which symptoms involved, and the other things are investigation. So the first line investigation, the next best investigation, that is TVS, and the diagnostic is, and the gold standard is laparoscopy, okay. So the two SBAs from this paragraph. You don't need to need all the high guidelines. So that's it's only the simple the recommendation, the highlighted point you have to read it. This is enough for exam, okay. So you don't have to read this full guidelines because they give them so much explanation, okay. So the treatment of endometriosis associated pain. The treatment first option is analgesia, NSAIDs alone or other analgesia. Hormonal treatment in the form of combined oral contraceptive, progesterone, GnRH agonist and antagonist to reduce endometriosis pain. And the last one is aromatase inhibitors. But if the patient is not controlled with analgesia, then first line is analgesia, then we have to add hormonal treatment.
But for hormonal treatment, you have to give continuously, you have to give the hormonal treatment, because if you have withdrawal bleeding, as we are giving as a contraception for the patient, that she have to wait for 7 days hormone free interval, and then the menses came, and then she can again start the pills. But in this case, you have to give continuously, you have to give the medication maximum up to 6 months, so that to give a full effect of the drug. Okay, सो आपने ये 6 मंथ तक देना होता है और कंटिन्यूस देना होता है, ठीक है, इसमें ब्रेक आपने नहीं करना. सो हार्मोनल ट्रीटमेंट में आपके पास यूसीपीज, प्रोजेस्टेरॉन, मारीना का भी बड़ा अच्छा रोल है इफ़ पेशेंट वांट हैव no fertility issues. So you have also advised her Mirena. Mirena is also a better option. So it will also relieve. So basically the hormonal contraception action is that it relieve dysmenorrhea and also reduce pain, and also effective in reducing bleeding. But in endometriosis we have basically pain. So with the hormonal, if you are suppress everything, so the pain, if hormones are not releasing, so the pain will be obviously reduced. So you have to memorize about the treatment option. The first one is analgesia. The other things are hormonal treatment in the form of COCPs, progesterone, and you have to give continuously you have to give in it. GnRH analog has a very good response, but the thing is that it is expensive. And the other thing, you have not to give it for more than 6 months, because it have certain side effects, like the patient develop menopausal symptoms, bone pain. So we have to avoid that. It will not be given for more than 6 months. And usually these patient responds well to hormonal treatment, especially young girls. They good response to hormonal treatment when you have to give it continuously. Aromatase inhibitors in which endometriosis associated pain refractory to other medical or surgical treatment. Okay, so this one is the last option. We have to not give aromatase inhibitors, because it have certain side effects. So if the patient is refractory to other medical treatment and surgical treatment is failed, so we have to give the option we have, that is aromatase inhibitor. But for exams you have to memorize the treatment options: analgesia, hormonal treatment, and also for talks you have to just memorize these things. नो एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं बताना टोक्स में, ठीक है. टोक्स में भी आपने बस स्पेसिफाई हो के आपने यही बताना है कि आपके पास नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, दैट इज एनर्जीजिया, एंड हार्मोनल ट्रीटमेंट वी हैव टू गिव सी ऑप्शंस अवेलेबल इफ द पेशेंट डज नॉट वांट fertility. So later on we have to discuss that infertility, what to choose. Okay, surgical management in that condition, when we have to do laparoscopy when the medical treatment failed. Okay, for example, if the young girl came with symptoms, so with symptoms we first start with medical treatment. So they had a good response to medical treatment. If they are not responding to the medical treatment, then we will proceed toward the surgical management. Okay, so in surgical management, we'll do diagnostic laparoscopy to stage the disease, as we have discussed the classification. So according to that, we have to classify that in which class of endometriosis is class 1, class 2, class 3, or class 4. So accordingly, we have to do, then we diagnostic laparoscopy, and the treatment option for available are excision and ablation of the endometriotic tissue. Okay, so when surgery is performed, clinician may consider excision instead of ablation of the endometriosis to reduce endometriosis associated pain. In previous guidelines, they say that ablation is good, but now they review that, and they said that now the excision is best instead of ablation of the endometriosis to reduce endometriosis associated pain. So laparoscopic other luna and presacral nerve is laparoscopic unilateral इस पे भी nerve को आप वो करते हैं, is not beneficial in an additional procedure to conventional laparoscopic surgery for endometriosis. So it has no additional benefit. लूना का आप कहते हैं कि इसका कोई additional benefit नहीं है, but presacral
nerve is beneficial for treatment of endometriosis associated midline pain as an adjunct to conventional laparoscopic surgery. But it should be stressed that presacral nerve require a high degree of skill and associated with increased risk of adverse effects such as intraoperative bleeding and post-op constipation, urgency, and painless first stage of labor. So that the nerves, presacral nerve and the luna, that is not beneficial and we have not to advise. So the better option we have to choose in exam, that if they ask about the surgery, so in option they give an excision of endometriosis, or they and the other option is ablation. सो आपने फिर एक्सिजन को चूज़ करना है, ठीक है. एक्सिजन बेस्ट है आपके पास एज कम्पेयर टू एब्लेशन. So when performing surgery in women with endometriomas, clinicians should perform cystectomy instead of drainage and coagulation, as cystectomy reduces the recurrence of endometrioma and endometriosis associated pain. Why cystectomy is preferred? Because when you are doing drainage, there may be chance that there is spillage, so there chance कि disease आपके पास फैल सकता है, ठीक है. So they have to there's chance that the disease may spread. So the better option is, in case of ovarian endometrioma, we will do cystectomy rather than we do excision and drainage. So this the MCQ, they also came in, I think, MRCG book, that in ovarian cystectomy, what you will do, whether you will do cystectomy or drainage. So you have to opt for cystectomy. So when performing surgery, clinicians consider both cystectomy and CO2 laser vaporization, as both technique have similar recurrence. Early post-recurrence rate may be lower after cystectomy. So cystectomy, they have to prefer that cystectomy is better because it's reduce the recurrence. Then clinician can consider performing surgical removal of deep endometriosis, as it may reduce endometriosis related pain. And the other things are that clinician can consider hysterectomy without removal of ovaries, with removal of all visible endometriosis lesion in women who no longer wish to conceive and fail to respond to more conservative treatment. Women should be informed that hysterectomy will not necessarily cure the symptoms or the disease. ठीक है. सो आप अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की फैमिली कंप्लीट है, सो we have consider in these cases we'll consider hysterectomy. But counsel that ज़रूरी नहीं है कि hysterectomy के साथ आपके जो symptoms है that will improve, because it's not connected with only uterus, because it involves the pouch of Douglas, peritoneal deposits. So different areas they involve. So somehow if the patient wants, if laparoscopy आपको लगे कि there is यूट्रस पे या ओवरीज पे आपको लगे कि देयर इज़ मल्टीपल एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स आपके पास यूट्रस और डिफरेंट जो क्या कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या ओवरीज में है, देन यू मे कंसिडर हिस्टेरेक्टमी इज़ अ बेटर ऑप्शन एंड दो कंप्लीटेड जिनकी फैमिली कंप्लीट है. ठीक है. तो इनमें फिर क्या करना होगा कि अगर आप हिस्टेरेक्टमी प्रेफर कर रहे हैं तो विदाउट रिमूवल ऑफ ओवरीज, in ovaries you have to individualize that we have to remove the ovaries or not. So it will also depend upon the age. If the patient age is almost 50-51 years, so better option we have to remove the ovaries, because in later ages there is chance of ovarian CA. But if the patient is at 40 years of age, why we give such early menopause to the patient? So we will individualize that whether to remove ovaries or not. So we will take the detailed history of the patient, that if patient have any previous history of personal or family history of breast or ovarian cancer, so we have taken the detailed history. And we will also discuss the patient that removal of the ovaries depend upon also we will look for the ovaries while during surgery. If there is endometriotic spot on both ovaries, so if we have to left these ovaries, they will give further the patient the same complaint of the pain. So also discuss the patient that we will take the consent regarding that. We will चेक हम देखेंगे कि पर ऑप अगर हमें लगा कि ओवरीज पे भी आपके कोई डिपॉजिट्स हैं और
मतलब इसको देखेंगे, अगर कोई डिपॉजिट है तो फिर हम ओवरीज भी हटाएंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ, अब ये आपके पास एक MCQ है, फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी अगर हिस्टेरेक्टमी हो गई है तो आपने फिर क्या देना है, ठीक है, फॉर मेनोपॉज के लिए, ठीक है। HRT आपका प्रेफरेंस कौन सा होगा। सो इफ़ यूट्रस रिमूव, तो यूजुअली अगर आपके पास यूट्रस रिमूव हो गया है तो हम सिर्फ एस्ट्रोजन देते हैं, ठीक है, बिकॉज देर इज़ नो यूट्रस, सो प्रोजेस्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है फॉर विड्रॉल ब्लीडिंग। हमें प्रोजेस्ट्रॉन का अगर आप नहीं देंगे, ओनली एस्ट्रोजन देंगे, तो देर इज चांस ऑफ एंडोमेट्रियल CA। बट इन दिस केसेस एंडोमेट्रियोसिस वी गिव कंबाइन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, बिकॉज अगर हम सिर्फ एस्ट्रोजन देंगे तो इनमें चांसेस होते हैं, ओवेरियन कैंसर के चांसेस होते हैं, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इज़ एन MCQ, पास रिकॉल्स में भी आया हुआ है और डिफरेंट MRCG के बुक्स में भी है कि आफ्टर एंडोमेट्रियोसिस फॉर menopause if the patient have symptoms of menopause, so HRT choice of drug is आपके पास क्या होगा, कंबाइन होगा, नॉट सिंगल। आप वो चूज़ नहीं करेंगे एस्ट्रोजन ओनली HRT, आप कंबाइन HRT को चूज़ करेंगे, ठीक है। Other medical therapies as adjunct to surgery, it is not recommended to prescribe pre-op hormone treatment to improve the immediate outcome of the surgery for pain with endometriosis. So pre-op आपका कोई रोल नहीं है, अगर आप हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे तो it will have no effect, no any further outcome of the surgery. So women may be offered post-op hormone treatment to improve immediate outcome of the surgery for pain in women with endometriosis if not desiring immediate pregnancy. So another MCQ यहाँ से आपका आएगा कि अब पोस्ट ऑप आपने, अगर फॉर एग्जांपल आप एंडोमेट्रियोसिस की जब आप वो कर रहे हैं, ठीक है, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं और आपने एक्सिजन एब्लेशन कर ली, तो आपने पोस्ट ऑप मस्ट पेशेंट को आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डालना है टू प्रिवेंट द रिकरेंस, ठीक है। इफ़ अगर पेशेंट वांट फर्टिलिटी चाहती तो ऑब्वियसली आप फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, लेकिन अगर आप एज ए नॉर्मल और पेशेंट के लिए करें, फॉर एग्जांपल यंग पेशेंट है या कोई at any age almost less than 40 years of age है and she don't have any fertility concern, so आपने इनको पोस्ट ऑप आपने एटलीस्ट 18 to 24 मंथ्स तक आपने इनको हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डालने हैं, ठीक है। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट आप कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पे भी डाल सकते हैं, और मायरीना बोथ हैव वेरी गुड एफिकेसी इन केस ऑफ दिस, ओके। So medical versus surgical management decision approach and take individual preference side effects, so depend upon the, आप पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि आपने हर एक चीज़ का, अगर मेडिकल और सर्जरी दोनों के आपने प्रॉज एंड कॉन्स बताने, साइड इफ़ेक्ट्स बताने, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप पेशेंट को वो चीज़ एडवाइस करेंगे। नॉन मेडिकल थेरेपीज़, अगर फिजियोथेरेपी, चाइनीज़ मेडिसन्स, acupuncture, so they have no recommendation can be made for specific कि मतलब इतना अच्छा बेनिफिट्स इनके नहीं थे, ठीक है, नॉन मेडिकल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में। अच्छा, देन अभी आता है हमारे पास फर्टिलिटी, ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड इनफर्टिलिटी। अच्छा, पेशेंट आपके पास आती है, ठीक है, दैट इनफर्टिलिटी के साथ आती है और अलॉन्ग विद दैट पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, तो हाउ वी कैन ट्रीट दिस टाइप ऑफ पेशेंट। सो आपने याद रखना है कि अच्छा क्या होता है कि बिकॉज ओवेरियन आपके पास जब एंडोमेट्रियोसिस ने आपको ओवरीज को इन्वॉल्व किया, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट हर फर्टिलिटी, बिकॉज आपके पास ओवेलेशन जो आपके पास होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास ओवेरियन रिजर्व भी कम हो जाता है इसमें, ठीक है, जब आपने एंडोमेट्रियोसिस इतना सिवियर डैमेज कर देती है ओवरीज को। सो in infertile women with endometriosis, clinician should not prescribe ovarian suppression treatment to improve fertility, क्योंकि अगर आप ओवेरियन सप्रेस करेंगे, आप ओवेरियन सप्रेशन हमें किस लिए चाहिए, ताकि आपको पेशेंट को पेन ना हो, लेकिन आप पेशेंट वांट फर्टिलिटी, तो उनमें तो आप ओवेरियन सप्रेशन नहीं करेंगे, बिकॉज फिर उनकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। So women seeking pregnancy should not be prescribed post-op hormone suppression with the sole purpose to enhance future pregnancy rate. As I have told you later that the patient, those who want fertility, so आपने फिर post-op patient को hormonal treatment नहीं देनी for suppression और for prevention of recurrence के लिए।
those who can not attempt or decide not to conceive immediately after surgery, so उनमें फिर आप ऑफर कर सकते हैं हार्मोनल थेरेपी. ठीक है. It does not negatively impact your fertility and improve the immediate outcome of surgery for pain. In infertile women with endometriosis, clinicians should not prescribe pentoxifylline, other anti-inflammatory drugs or letrozole outside ovulation induction to improve natural pregnancy rate. ठीक है. सो इनमें आपने कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जो फर्टिलिटी चाहती है तो यूजुअली हम एनाल्जेसिया ऑफ चॉइस हमारे पास एनसीड्स होता है, तो यूजुअली आप एनसीड्स को भी प्रिस्क्राइब नहीं करते इन पेशेंट में. ठीक है. अदर फॉर्म ऑफ जैसे पैरासीटामोल हो गए, बिकॉज एनसीड्स आर एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड इट बेसिकली आपके पास जो यूटिलाइजेशन करता है. ठीक है. तो इसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम प्रिस्क्राइब करते हैं अदर फॉर्म ऑफ एनाल्जेसिया, अवॉइड दोज. अगर जो फर्टिलिटी चाहते तो उनमें फिर हम एनसीड्स नहीं देते, उनमें फिर अदर फॉर्म ऑफ जो आपके पास ड्रग्स है जैसे पैरासीटामोल वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं. ठीक है. Operative laparoscopy should be offered as a treatment option for endometriosis associated infertility in ASRM stage 1 to endometriosis and improve the rate of ongoing pregnancy. Okay. So in pregnancy, for example, if the patient in previous situation up till now we have discussed that if the patient is young or if the patient does not want fertility, so the first option we have medical management. We have to start from medical management. If the patient not improve with medical management, then we will proceed toward the diagnostic laparoscopy to stage the disease, and then we will it's not the treatment for endometriosis only. We have to suppress the hormones. So if the patient not respond to medical management, so we have to do laparoscopy, we will do excision or preferably, or we can also do ablation, but excision is preferable. And then we have to continue with after excision and ablation, then post-op we have to continue hormonal treatment for 18 to 24 months. But if the other scenario is that the patient who want fertility, in fertility you will not start with our first line of management is not medical treatment. Our first line of management is surgery. Surgery in the form of we will do diagnostic laparoscopy to stage the disease, and if there is any ovarian endometrioma, if there is ovarian endometrioma less than 3 centimeter, we will not remove it, but more than 3 centimeter endometrioma we have to remove it because it will increase the chance of fertility and spontaneous pregnancy. If we have to leave that endometrioma, so there is less likely that the patient will the chance of fertility chances may be reduced. So we have to, if we have more than 3 centimeter endometrioma, we have to remove. So so you have to memorize that in infertility, we first or our option for first treatment option will be surgery. ठीक है. तो सर्जरी हम करेंगे, सर्जरी में हम लेप्रोस्कोपी करेंगे, डिजीज स्टेज करेंगे. ठीक है. और उसके बाद फिर एक्सिजन एब्लेशन अगर आपको विजिबल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट मिले, देन आफ्टर दैट आपने पेशेंट को फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट करवाना है. ठीक है. क्योंकि आप ऑब्वियसली पेशेंट जब कंसीव नहीं कर रही, आप उसी दौरान जब आप स्टेज कर लेंगे, क्योंकि आपको ट्यूब्स का भी पता चल जाएगा कि ट्यूब्स कैसे हैं, तो आपने फिर उसमें लेप्रोस्कोपी एंड डाई टेस्ट भी उस टाइम करना है, ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना है. देन आपने अगर पेशेंट के ट्यूब पेटेंट है, स्टेज 1 या स्टेज 2 एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब पेटेंट है, देन आपने पेशेंट को स्टार्ट करवाना है ट्रीटमेंट ओव्यूलेशन इंडक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्लोमिफेन सिट्रेट, या आप स्टार्ट करवाएंगे इंट्रायूट्राइन इंसेम, या पेशेंट प्रीवियसली ले चुकी है आपके पास क्लोमिफेन सिट्रेट या ओव्यूलेशन इंडक्शन ले चुके, तो फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या होगा, आपने फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन अलोंग विथ ओव्यूलेशन इंडक्शन. ठीक है. तो फिर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास ये वाला होगा. ठीक है. अगर उसके साथ भी नहीं होता, देन आप फर्दर जाएंगे IVF पे. लेकिन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द पेशेंट कि इनफर्टिलिटी कितने ईयर्स तक है. ठीक है. मैं लेटर ऑन मैं डिस्कस करूँगी, इसका कुछ स्कोर होता है EFI स्कोर. ठीक है. उस पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट को आपने किस कैटेगरी में डालना है. ठीक है. लेकिन लेटरली इन्होंने जिस तरह आपको कहा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल स्टेज 1 एंड
ACRM स्टेज 1 एंड 2 एट विल इम्प्रूव द, तो आप लेप्रोस्कोपी करेंगे, ठीक है. क्लिनिशियन may consider operative laparoscopy for the treatment of endometrioma associated infertility it may increase the chance of natural pregnancy although no data from comparative study exists. ठीक है, तो आपने ऑपरेटिव लेप्रोस्कोपी, तो आप एंडोमेट्रियोमा को हटाएंगे बिकॉज इट विल इंक्रीज द चांस ऑफ नेचुरल प्रेगनेंसी. Although no compelling evidence exists that operative laparoscopy for deep endometriosis improve fertility, operative laparoscopy may represent a treatment option in symptomatic patient wishing to conceive. ठीक है, तो डीप एंडोमेट्रोसिस में कोई ख़ास इतना एविडेंस नहीं है कि इस फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, लेकिन जो तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है, 1 एंड 2 में इनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं. ठीक है, अगर आप लेप्रोस्कोपी करते हैं, एक्सिजन आप करते हैं, ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा अगर आप वो हटा देते तो उसके फिर बड़े अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. ठीक है, तो GTG recommend that decision to perform surgery should be guided by the presence or absence of pain symptom, patient age, preference, history of previous surgery, presence of other infertility factors, ovarian reserve, and estimated endometriosis fertility index. As I have told you that फिर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेशेंट एज पे भी डिपेंड. अगर एज मोर देन 35 है तो आप इतना तो वेट नहीं कर सकते ना पेशेंट को, क्या आप पहले ओवुलेशन इंडक्शन देंगे फिर IUI करवाएंगे, तो एज पे भी बड़ा डिपेंड करता है. ठीक है, अगर इनफर्टिलिटी कितनी ईयर्स की है, अगर 2 ईयर्स की इनफर्टिलिटी है, मोर देन 2 ईयर्स की, और ट्यूब्स पेटर्न है, ओवुलेशन इंडक्शन ले चुकी है, तो अकॉर्डिंगली फिर आपने पेशेंट का डायरेक्ट IVF पे जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली एज ज़्यादा हो रही है, ओवेरियन रिजर्व कम हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपने मैनेजमेंट को चेंज करना होता है. अगर लेस देन 35 है, लेस देन 30 है, तो उसको आप ट्रायल दे सकते हैं. आप अगर पेशेंट ओवुलेशन इंडक्शन नहीं लिया, आप ओवुलेशन आप वो करके लेप्रोस्कोपी करके और स्टेज कर लें, एक्सिजन कर लें, एब्लेशन, तो इसके साथ फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है. और उसमें आप क्या करते हैं, ओवुलेशन इंडक्शन स्टार्ट कर ले, उसके साथ नहीं हो तो IUI का ऑप्शन आप दे देते हो, उसके साथ पेशेंट प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है. ठीक है, women should be counseled that chances of becoming pregnant after surgery to identify patient that may benefit from artificial reproductive techniques after surgery. The endometriosis fertility index should be used as it is validated, reproducible, and cause effective. The result of other fertility investigations such as partner semen analysis should be taken in account. So infertility का आपने प्रॉपर फॉलोअप करना होता है. ओनली अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है और अब आइए कि मेरे एंडोमेट्रियोसिस में कंसीव नहीं करनी, बट इन इनफर्टिलिटी बेस लाइन आपने सारे इन्वेस्टिगेशन करने. सो द मोस्ट इनफर्टिलिटी का मोस्ट जो प्राइमरी कॉज है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कॉज है, वो मेल है, मेल इनफर्टिलिटी है. सो अगर आपके पास पेशेंट यंग है, ठीक है, कोई कंसीव नहीं की, नली पैरिटी है, तो आपने अगर पेशेंट का पार्टनर सीमेन एनालिसिस नहीं हुआ तो आपने वो करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कंसीव विद एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 1 स्टेज 2 में तो बड़ा आसानी से कर लेते, ज़रूरी नहीं है गोटी. लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर आप प्रॉपर इनका HSG भी करवाते हैं, आप फिर लेपेंडाई भी करवाते हैं ट्यूब के पेटेंसी के लिए, और हस्बैंड सीमेन एनालिसिस इंपॉर्टेंट. Medical assisted reproduction. In infertile women with reproductive and ASRM stage 1-2, clinician may perform IUI with ovulation induction with ovarian stimulation instead of expected management or IUI alone, and it may increase the pregnancy rate. ठीक है, and for stage 3 and 4, tubal patency is uncertain. The use of IUI with ovulation induction could be considered. ठीक है, तो stage 3 and stage 4 में भी अगर आपने स्टेजिंग कर ली है तो उसमें भी फिर आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं IUI विद ओवेरियन IUI एंड ओवेरियन स्टिमुलेशन का आप वो दे सकते हैं. लेकिन ये ओनली डिपेंड अपॉन द EFI स्कोर कि पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. ठीक है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के फर्दर अपने रिस्क फैक्टर्स क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करते हैं. फॉर MCQ पर्पस आपने ये याद रखना है कि स्टेज 1 एंड 2 में आप ओवेरियन IUI विद ओवेरियन स्टिमुलेशन करना है. ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंस्पेक्टेड मैनेजमेंट. और 3 and 4 में आप क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं IUI विद ओवेरियन स्टिमुलेशन. ठीक है, इसमें कंसिडर करना है. ठीक है, और उस 1-2 में आप करेंगे, आप एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाएंगे. लेकिन अगर आपके टोक्स के रिलेटेड स्टेशन आए तो टोक्स में आपने पेशेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड अपॉन उसकी भी, अगर 1 year इनफर्टिलिटी है तो आप पेशेंट को नेचुरली भी आप
पेशेंट के पास टाइम है, आपने एंडोमेट्रियोसिस की सारी सर्जरी कर ली है, ठीक है, 1 ईयर का टाइम हुआ है, तो उसमें आप पेशेंट को ऑप्शन दे सकते हैं फॉर टोक्स रिलेटेड कि आप उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन का फर्स्ट आप दे सकते हैं। आप डायरेक्ट IUI पे जंप नहीं करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है, और जो आपकी क्लिनिकल जो है वो ज़रा अलग टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। तो उसमें फिर आपसे एग्जामिनर्स ज़रा डिफरेंट, उनका अप्रोच डिफरेंट होता है, तो वो वही चाहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम के पर्पस में आपको स्टेज 1 या 2 आए तो आपने क्या करना है कि आपने एग्ज़ामिनर को बताना है कि मैं लेप्रोस्कोपी करूँगी, ठीक है, मैं डायग्नोज करूँगी, ठीक है, कि कौन सा स्टेज है। देन मैं फिर पेशेंट को जब स्टेज हो जाए ट्यूबल पेटेंसी मैं चेक कर लूँगी, ठीक है, स्टेज करूँगी, फिर एक्सिजन जितने आपको विजिबल एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट है वो मैं हटा दूँगी। देन उसके बाद वी हैव टू चेक दैट to check the tubal patency, and after the tubes are patent then we will give an option of ovulation induction. Start with आपने स्टार्ट करना है ओव्यूलेशन इंडक्शन के, ठीक है। मोर देन 1 ईयर ऑफ फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है आपके पास, तो आपने अप्रोच किस तरह करना है, पहले आपने ओव्यूलेशन इंडक्शन देना है। अगर उसके साथ नहीं होता तो फिर मैं IUI के साइकिल्स दूंगी। 6 साइकिल्स ओव्यूलेशन इंडक्शन के होते हैं, 6 साइकिल IUI के, तो इसके साथ नहीं होता फिर मैं IVF की तरफ जाऊँगी, ठीक है। तो टोक्स के रिलेटेड यू हैव टू सिस्टमेटिक आपने अप्रोच इस तरह रखना है। बट फॉर MCQs आपने याद रखना है कि अगर स्टेज 1 2 है तो IUI विद ओव्यूलेशन इंडक्शन ओवेरियन स्टिमुलेशन में चूज़ करना है। अगर 3 and 4 है तो कंसिडर, अगर आपके पास ऑप्शन में है कंसिडर IUI विद ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन, तो आप ये ऑप्शन पर चूज़ करेंगे। ART कैन बी परफॉर्म फॉर इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड विद एंडोमेट्रियोसिस, especially if tubal function is compromised or if there is male factor infertility in case of low EFI or if other treatment have failed. तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के आप तब जाएंगे, ठीक है, स्टेज 3 and 4 में आपके पास अगर ये सिचुएशन आ जाए कि ट्यूब्स पेशेंट के ठीक नहीं है, पेटेंट नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर आप उसमें तो IUI और ओव्यूलेशन इंडक्शन आप नहीं कर सकते, उसमें तो आप फिर डायरेक्ट IVF पे जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या मांग रहे हैं। अगर सिर्फ स्टेज 3 दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें पूछा है कि आपने क्या करना है, ऑप्शन में आया हुआ है कि कंसिडर IUI विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, नेक्स्ट आया IVF, नेक्स्ट आया ओरल ओव्यूलेशन IUI विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, नेक्स्ट आया ओव्यूलेशन इंडक्शन। तो आपको सिर्फ पूछा स्टेज 3 एंडोमेट्रियोसिस है, कंसिडर, तो फर्स्ट आप कंसिडर करेंगे IUI विद ओव्यूलेशन इंडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपको दिया हुआ है कि स्टेज 3 एंडोमेट्रियोसिस है एंड ट्यूब्स आर नॉट पेटेंट, सो आपने फिर डायरेक्ट या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जो आपके पास है IVF या ICSI उसकी तरफ जाना है, ठीक है। और एसोसिएटेड विद अगर मेल इनफर्टिलिटी भी आ गई, उसमें आपके पास लो EFI है, ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी भी आ गई, तो मेल इनफर्टिलिटी में फिर आप क्या करेंगे, डिपेंड करता है कि मेल के कौन से पैरामीटर्स आपके पास लो हैं। तो अगर मेल इनफर्टिलिटी है तो उसमें फिर आप IVF के बजाय आप ICSI की तरफ जाएंगे, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, सिरिंज के थ्रू डायरेक्ट स्पर्म डालते हैं एग में। दूसरे में तो IVF में एक अलग डिश में बोथ द एम्ब्रियो एंड स्पर्म्स आर टुगेदर, दे विल फर्टिलाइज, बट इन ICSI you have to direct inject the sperm into the ovaries, okay. So specific protocol for ERT in women endometriosis cannot be recommended. Both GnRH antagonist and agonist protocol can be offered based on patient and physician preference, and there is no difference in pregnancy or live birth as well demonstrated, ठीक है। तो GnRH agonist को प्रोटोकॉल अगर फॉर एग्जांपल नहीं चाहती तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ रेट पे। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट फ़िलहाल प्रेगनेंसी नहीं चाहती और आप उसको एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट स्टार्ट करवाना चाहते हैं, तो इनका मतलब ये है कि इसका कोई ख़ास, अगर फर्दर वो कंसीव करना चाहती है तो वो कर सकेगी, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ रेट पे। Women with endometriosis can be reassured regarding the safety of ART since the recurrence are not increased compared those women not undergoing ART, ठीक है। तो reassure करना है कि ART के साथ कोई रिकरेंस का कोई ख़ास वो नहीं है, ठीक है। In women with endometrioma, clinician may use antibiotic prophylaxis at the time of oocyte retrieval, although the risk of ovarian abscess formation following follicle aspiration is low, ठीक है। आपके पास इस टाइप का भी MCQ आएगा कि आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है, ठीक है। तो आपने अगर oocyte रिट्रीवल करना है इन IVF में तो रिस्क ऑफ ओवेरियन एब्सेस होते हैं, ठीक है, चांस ऑफ रिस्क ऑफ ओवेरियन एब्सेस के चांसेस होते हैं, तो उसमें आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस देना है, ठीक है। ये आपका MCQ, आई थिंक सीमा शर्मा का ये आपके पास MCQ है।
The extended administration of GnRH agonist prior to ART to improve live birth rate in infertile women with endometriosis is not recommended. ठीक है, तो GnRH यूजुअली स्टेज 3 एंड स्टेज 4 में क्या होता है कि बड़ी एक्सटेंसिव आपके पास जब एडिशंस होते हैं तो उनमें आप क्या करते हैं, पेशेंट को प्री ऑप GnRH एगोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपके पास अगर आप क्योंकि जब आप डायरेक्ट लेप्रोस्कोपी करेंगे तो सराउंडिंग स्ट्रक्चर के इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो प्री ऑप वो GnRH एगोनिस्ट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट आप आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का स्टेज 3 एंड स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस है और आप ART कर रहे हैं, आर्टिफिशियल IVF या ICSI कर रहे हैं, तो उससे पहले GnRH एगोनिस्ट का कह रहे कोई रोल नहीं है। तो पहले जो गाइडलाइंस में था पिछले में कि आपने GnRH एगोनिस्ट बिफोर IVF ICSI, तो इसका इम्प्रूव है, लेकिन अभी ये कहते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, तो आपने GnRH बिफोर IVF ICSI नहीं देना, ठीक है। Clinician not recommend routinely perform surgery prior to ART to improve live birth rate in women with stage 1 and 2 endometriosis as the potential benefits are unclear, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लान ही स्टार्ट से ही है कि पेशेंट के फॉर एग्जांपल ट्यूअर की इनफर्टिलिटी हो गई है, कोई और फैक्टर्स है, ओवेरियन रिजर्व लो है और आप यू हैव टू प्लान दैट हम करेंगे इसका IVF, उसके लिए अगर आपका प्लान IVF है ना तो आपने कोई स्टेजिंग फिर आप नहीं करेंगे, ठीक है। स्टेजिंग जो आप करते हैं, ठीक है, जो लेप्रोस्कोपी के जो आप एक्सिजन और एब्लेशन करते हैं, ठीक है, अगर आप ओवुलेशन इंडक्शन का पेशेंट को ट्राई दे रही या IUI विद ओवुलेशन इंडक्शन का वो दे रहे ट्रायल दे रहे, तो उनमें आपने करना है। लेकिन अगर आपका प्लान ही फर्स्ट ये है कि आपने IVF या ICSI करना है, तो अगर एंडोमेट्रियोमा मोर देन 3 सेंटीमीटर है या लेस देन 3 सेंटीमीटर है, तो आपने इनमें ये कहते हैं कि आपने स्टेजिंग नहीं करनी, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपके पास ये एक्सेप्शनल केस है कि IVF और अगर ICSI आपका प्लान है तो आपने फिर डायरेक्ट IVF ICSI करना है, आपने डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी आपने नहीं करनी फॉर स्टेजिंग। लेकिन अगर आपका प्लान नहीं है फॉर IVF ICSI और आप चाहते हैं कि इस पेशेंट को ट्रायल मिलना चाहिए IUI विद ओवुलेशन इंडक्शन, तो उसमें फिर आप स्टेजिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसमें आप सारे जो एंडोमेट्रियोमा को भी हटाएंगे क्योंकि उससे आपका जो बर्थ रेट आपके पास इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसके साथ इम्प्रूव होता है। लेकिन ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है IVF ICSI, तो इसमें ज़रूरत फिर नहीं होती क्योंकि ये आप नेचुरली बाहर से ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें आपने करना है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। Surgery for endometrioma prior to ART can be considered to improve endometriosis associated pain and accessibility of follicles. Actually, sorry. The 56 one is clinician not recommend to routinely perform surgery for ovarian endometrioma prior to ART to improve live birth rate as the current evidence show no benefit and surgery is likely to have a negative impact on ovarian reserve. Okay. So this point is also very important as we have to discuss that before ART, if you are doing IVF ICSI, if there is endometrioma, you have not to remove because it has a negative impact on ovarian reserve, ठीक है। But for I show no benefit. But surgery for endometrioma prior to ART can be considered to improve endometriosis associated pain or accessibility of follicles. But they कहते हैं कि आप consider कर सकते हैं, ठीक है। If MCQ आ जाए आपके पास, if there is an MCQ that patient we have to plan for IVF, okay, and the options are whether we have to and there is ovarian endometrioma stage 3 endometriosis and there is an ovarian endometrioma, so we have to remove that endometrioma, or the other option is we have to consider to remove endometrioma, we have to not to remove the endometrioma। तो अगर आपके पास आ जाए ऑप्शन में कंसिडर, तो कंसिडर में आप फिर आपने ये ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि आप कंसिडर कर सकते हैं, सो बिकॉज टू इम्प्रूव एंडोमेट्रियोसिस एसोसिएटेड पेन और फॉर एसेसिबिलिटी ऑफ फॉलिकल्स इजीली आप वो कर सकते हैं, ठीक है। दे रिकमेंड नहीं करते, रिकमेंड दैट ये रिकमेंड करते कि आपने ये करना है। You have to differentiate between things that what they are saying, what they want. If they are saying that it is recommended, so you have to do. And if they are saying consider, so it means we can consider. It's our option, depend upon the situation. We can consider it. If they are saying that before ovarian endometrioma, they have no effects, generally there no evidence.
But in next line, they said that we can still consider for that because improvement in endometriosis associated pain will also with this that endometriosis associated pain can also be improved. And the other thing that if we have to retrieve the follicle, so accessibility of the follicle can be easily for us. ठीक है, so MCQ को आपने so to attempt the MCQ you can assess that the level of MCQ आपने देखना है कि क्या इस ऑप्शन में ये क्या मांग रहे, ठीक है. अगर आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएं, ठीक है, तो अगर कंसिडर आ गया तो ऑब्वियसली फिर आप कंसिडर कर सकते हैं. The decision to offer surgical excision of deep endometriosis prior to ART should be guided mainly by pain symptom and patient preference, as its effectiveness on reproductive outcomes is uncertain. And they are saying that if there is stage 3 and stage 4 deep endometriosis है, ठीक है, और आप and you are planning for IVF ICSI, you have not to state the disease. I have told you before that you have not to do excision or ablation. But if the patient wants that I have severe pain, also she have a fertility issue and she have a pain, so for pain you can do excision and ablation. But for before ART, if the patient have no complaint regarding the pain, so it is not indicated that you have to do excision and ablation before ART. Non-medical management strategies for infertility. So regarding non-medical strategies on infertility, there is no clear evidence that medical intervention for women with endometriosis will be benefit to increase the chance of pregnancy. ठीक है, so nutrition, Chinese, so in both cases infertility और इनमें इसका कोई रोल नहीं है. ठीक है, जो acupuncture है, physiotherapies है. Fertility preservation. In case of extensive ovarian endometriosis, clinicians should discuss the pros and cons of fertility preservation with women with endometriosis. The true benefits of fertility preservation in women with endometriosis remain unknown. Impact of endometriosis in pregnancy and outcome. So if the patient get pregnant, so what are the outcomes? So the outcomes are that endometrioma may change in appearance during pregnancy. In case of finding an atypical endometrioma during ultrasound in pregnancy, it is recommended to refer the patient to center with appropriate expertise. Complication-related pre-existing endometriosis lesions are rare but probably underreported. Such complication may be related to their decellularization, adhesion formation, stretching, endometriosis-related chronic inflammation, although rare. They may present life-threatening situations that may require surgical management. So the clinician should be aware there may increase risk of first trimester miscarriage and ectopic in women with endometriosis. So if the patient after endometriosis patient conceives, so you have to discuss the patient that there is chances of first trimester miscarriage and ectopic pregnancy because the tubes or everything are very affected. So there may be chance of ectopic pregnancy. So you have to discuss these two things with the patient. Achha, then we will proceed toward the recurrence. So when surgery is indicated with endometrioma, clinician should perform ovarian cystectomy instead of drainage and electrocoagulation, as we have already discussed previously. For the secondary prevention of endometriosis associated dysmenorrhea, dyspareunia, non-menstrual pelvic pain, however, the risk of ovarian reserve should taken in account. ठीक है, ovarian reserve आपने ध्यान में रखना है कि कितना है. ठीक है. Clinician should be prescribing the post-op use of levonorgestrel IUS 52 mg or combined COCP for at least 18 to 24 months for secondary prevention of endometriosis associated dysmenorrhea. Important MCQ है. ठीक है, कितने टाइम तक आपने देना? 18 to 24 months combined COCPs or levonorgestrel IUS. So prevention of recurrence of deep endometriosis and associated symptom, long-term administration of post-op hormone can be considered. ठीक है, इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं. Clinician can perform ART in women with deep endometriosis as it does not seem to increase endometriosis recurrence per second. Treatment of recurrent endometriosis. Any hormone treatment or surgery can be offered to treat recurrent pain symptoms in women with endometriosis. ठीक है, तो recurrence के लिए भी same आपने भाई you have to follow the same protocol that we have to apply previously before recurrence. ठीक है, so endometriosis and adolescence का same ही जो मैंने पढ़ा है. ठीक है, इनमें same आपने भाई, but आपने सिर्फ ये कि GnRH agonist इनमें आपने मैक्सिमम ज़्यादा
clinician may consider prescribe इनमें ये बताया हुआ है कि in adolescents with laparoscopy confirmed endometriosis and associated pain in whom hormonal treatment or progesterone therapy failed, clinician may consider prescribing GnRH agonists for up to 1 year as they are effective and safe when combined with add-back therapy. ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मीनोपॉजल सिम्टम्स के लिए मैक्सिमम आप 6 मंथ तक दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेशेंट इसके साथ इम्प्रूव हो रही है तो आप 1 ईयर तक भी यंग में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपने एड बैक हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे भी डालना है क्योंकि इसमें मेनोपॉजल सिम्टम्स आ जाते हैं. सो फॉर दैट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉजल सिम्टम्स, तो आप इसको फिर एड बैक थेरेपी HRT पे भी डाल दें. तो ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट न्यू पॉइंट है. ठीक है, अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस एंड मेनोपॉज. ठीक है, तो मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में हमने क्या कहा था कि क्लिनिशियल में कंसिडर सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन प्रेजेंटिंग विद साइन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. The GTG recommend that clinical knowledge and uncertain toward the risk of malignancy in postmenopausal women. If the pelvic mass is detected, तो आपने इसका postmenopausal में अगर आपके पास pelvic mass आ गया तो आपने proper workup करना है. ठीक है, तो इसमें आपके पास DDs में ovarian cancer भी आएगा बिकॉज menopause में आपके पास लेटर ऑन आपके पास ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तो मेनोपॉज सिम्टम्स इन वुमेन, द पेशेंट को सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, मेनोपॉज है और सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है, तो इनमें आपने क्या करना है, क्लिनिशियन में कंसिडर कंबाइंड हार्मोनल थेरेपी for treatment of postmenopausal symptom in women, but after natural and surgical, both after natural and surgical menopause with history of endometriosis. ठीक है, as I have told you previously, अगर मेनोपॉज हो जाए, सर्जिकल मेनोपॉज या नेचुरल मेनोपॉज है, तो आपने कंबाइंड मेनोपॉजल हार्मोन ट्रीटमेंट देनी, एस्ट्रोजन अलोन आपने नहीं देना. ठीक है, ये आपका SBA है, MCQ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है. क्लिनिशियन शुड अवॉइड प्रिस्क्राइबिंग एस्ट्रोजन ओनली रेजिमेन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेसोमोटर सिम्टम इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विद द हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रियोसिस एज दीज रेजिम में एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, देन आपके पास आता है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, जो हमारे पास डीप सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है. क्लिनिशियन शुड बी अवेयर ऑफ सिम्टम्स ऑफ एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस सच एज साइक्लिकल शोल्डर पेन, साइक्लिकल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स, साइक्लिकल कफ, नोड्यूल्स enlarged during menses. ठीक है, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू डिस्कस डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम. So for abdominal extrapelvic endometriosis, surgical removal is the preferred treatment where possible to relieve symptom. And hormonal treatment may also be an option when surgery is not possible or acceptable. ठीक है, extrapelvic का कह रहे हैं. And for thoracic, if hormone treatment can be offered, if surgery is indicated, it should be performed in a multidisciplinary manner. Thoracic surgeon को आपने involve करना है. ठीक है, अच्छा, asymptomatic endometriosis का the DTG recommend that clinician should inform and counsel about any incidental finding of endometriosis. ठीक है, कुछ ज़रूरी नहीं है हर पेशेंट में आपके पास सिम्टोमेटिक हो, कुछ में आपके पास एसिम्टोमेटिक भी होता है. तो क्लिनिशियन शुड नॉट routinely perform surgical excision ablation for an incidental finding of asymptomatic endometriosis at the time of surgery. Clinician should not prescribe medical treatment एंड वोमिट विद इंसिडेंटल. तो अगर आपके पास जब भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, ठीक है, और अगर आपको इंसिडेंटली आपको ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा मिल गया तो आपने कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करनी. ठीक है, what are the primary prevention of endometriosis? No direct evidence that there is any preventing endometriosis. So the useful of hormonal contraceptive from the primary prevention of endometriosis is uncertain. So no primary prevention for endometriosis. Secondary prevention is that we have to start with hormonal treatment, but there is no primary prevention for endometriosis. So last guideline लास्ट जो इसका हमारा वो है रिकमेंडेशन है, एंडोमेट्रियोसिस एंड कैंसर. क्लिनिशियन शुड इन्फॉर्म वुमेन विद एंडोमेट्रियोसिस requesting information their risk of developing cancer that endometriosis is not associated with a significantly high risk of cancer overall. So although endometriosis with the high risk of ovarian, breast and thyroid cancers in particular, the increase in absolute risk compared with women in general population is low. ठीक है, so it has a limited data. Clinician should reassure women with endometriosis about of risk of malignancy associated with use of hormonal contraceptive. In women with endometriosis, clinician should not systematically perform cancer screening beyond the existing population-based screening guidelines. So clinician can consider cancer screening according to the local guidelines. For example, strong family history, specific germline mutation. So clinician must be aware that there is epidemiological data mostly on the ovarian endometriosis showing that complete excision of
visible endometriosis may reduce the risk of ovarian cancer. The potential benefit should be weighed against the risk of surgery. सो मॉर्बिडिटी पेन एंड ओवेरियन रिजर्व. सो इसमें यह है कि आपके पास रिस्क, जब आपके पास ओवेरियन होता है तो उसमें आपके पास सीरियस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है. ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस के साथ ये भी आपने याद रखना है कि एंडोमेट्रियोसिस के साथ आपका सीरियस ओवेरियन कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, so we will continue with the rest of second part for endometriosis, in which we will discuss few slides of nice guidelines and कुछ Eshre के कुछ tables हैं and a talk article. बस next आपके पास छोटा सा आपके पास वो है lecture है. Inshallah we will continue with the next lecture for endometriosis. Thank you so much.